So I think recording has been started now. So I was talking that we have two type of biofortification, agronomic biofortification, and then we have genetic biofortification, where we have conventional breeding, and then we have marker-assisted breeding, and then we have transgenic approach. We will discuss about all these. So first of all, agronomic biofortification. Uh, it is clear from the word agronomic that it's some kind of relevant to agronomic approaches or management of soil or application of fertilizers. So that all is included in agronomic biofortification, and it works overall. So we have several studies uh, which have mentioned that we can do this agronomic biofortification. Although we have several discussions on that as well, there are some people who say that the agronomic biofortification is not very much effective, but as a whole, it is effective. So there are several reasons for that. Uh, we, I would say that agronomic biofortification is mostly effective where we have deficiencies in the soil, or we have some issues in the soil. We have soil pH issues. Uh, Somewhere we have alkaline soil, somewhere we have acidic soil. So the availability of nutrient is not sufficient in those areas. So if we apply the fertilizers or if we manage that soil, then in those kind of soil, agronomic biofortification is important. Uh, but on the other hand, uh, we cannot enhance the concentration of nutrients above the potential of any genotype or any variety. For example, if a variety has a maximum potential of 40 ppm zinc, so we cannot enhance by application of fertilizer or managing the soil. But if we have a soil which has a less amount of those nutrient, and the crop is not giving up to its maximum potential, क्योंकि जब 40 ppm उसी वक्त होगा when we will have a sufficient amount in the soil, or we have best qualities in the our best characteristics of the soil where that crop has grown. If we want to enhance the potential of that genotype or variety, so then of course we have to go for genetic biofortification, where we have three methods: the conventional breeding, marker assisted breeding, and transgenic approach. In conventional breeding, uh, we have very simple. We have a cross like P1, P2, and then we have next generation, and we will characterize those, and we will see that whether some of the offspring has enhanced quantity of nutrients or not. If they have enhanced quantity, of course, we will go for further investigation. But in marker assisted breeding, it's relatively faster. We find out the genes relevant to any nutrient concentration, zinc concentration in grain or iron concentration in grain, and we will mark those genes, and then we will cross, uh, and in the start we can check that whether that gene has been transferred to the offspring or not. If it is not transferred to the offspring, of course it means that will not work. And those offspring which have that gene which for which we are interested, of course we will proceed with that further. uh, the difference between conventional and marker assisted breeding is that it is relatively faster as compared to conventional breeding, क्योंकि इसमें हमें full maturity तक नहीं जाना पड़ेगा. हम
जो स्टार्ट में ही अगर हमारे ऑफस्प्रिंग में हमारे को 10 प्लांट्स आते हैं तो हम चेक कर लेंगे कि किस में जो है वो जीन जो है वो जो हमारे इंटरेस्ट का है वो है, अगर वो है तो देन वी कैन प्रोसीड इट फर्दर। हमें फुल मैच्योरिटी तक ग्रो करने की जरूरत नहीं। Here is the pictorial of marker assisted breeding. We have parent with QTL2, QTL1, and then in offspring, if we have interested QTLs, so we can proceed it further. If we don't have, then we don't need to proceed. We have to breed it again. And the third option, that is transgenic approach. That is basically the genetically modified, we can say. In this, we find out the specific genes for the transport of zinc, for example, or for iron, or for any nutrient, iodine, which is responsible for accumulation of that element to the grains, or is responsible for uptake from the soil to enhance the uptake efficiency of the plant. So we isolate that gene and we transfer it to the uh, uh, required to the genotypes in which we want to transform, and that gene is transformed to that cultivar, and then we can observe that in most of the cases it works. It will work effectively as per requirement, but in some cases it can't be, because sometimes it is genes which is isolated from any other plant species. So it is not necessary that that will work in our species or not. And sometimes it is from another genotype, and we are also not aware if we transfer it to our interested or our cultivars where we want to transform it. Uh, so it may not work there, as because it is a kind of enzyme, a protein, so that has been transformed, but the working is still in question. So it is very quick as compared to conventional breeding, or as compared to marker assisted breeding. uh, you can observe from here, this is only a rice plant, and approach 1, 2, 3. For example, approach 1 is the endospermic specific expression of ferritin. Uh, that is relevant to accumulation of iron into the endosperm. Then we have overexpression of uh, Na synthase and nicotinamide synthase, which is responsible, for example, iron. And then we have translocation of iron. Then we have uh, some transporter genes here in approach 3, then in approach 4. So it means there are a lot of things which we can do with the single plant or single genotype, and we can add multiple genes in a plant to enhance the concentration of that specific nutrient into the uh, grains. Because all these processes are relevant to different activities. For example, if we have gene here in the roots, that will enhance the uptake, and then we need its translocation toward the shoot, and then of course we need its accumulation into the reproductive part, which is needed. So uh, it is very fast, quick method, but of course it has many ethical concerns as well, and still the people are a huge part of the world, so they are not much interested having these genetically modified uh, crops or other organisms. So these are basically the iron biofortification approaches. I have just explained here all the approaches, that what is the role of that specific gene. So that was basic different types of the biofortification. Now approaches. So what are basically the approaches of biofortification?
Uh, so as we have discussed many times during our the previous part, when we were talking about the phytoavailability, increase in mineral uptake capacity of plants, then enhance mineral accumulation in the edible parts, and then improve the bioavailability of minerals. Because these are the four basic approaches which we can adopt uh, for biofortification. The first one, that is increase the phytoavailability of minerals. So the phytoavailability of minerals uh, can be enhanced by genetic approach. For example, we can increase the acquisition from the soil, because the soil has some characteristics which can enhance the phytoavailability of any nutrients. For example, the acidification of rhizosphere especially enhances the uptake of micronutrient, exudation of low molecular weight compounds, these organic acids. So they not only acidify the rhizosphere, but also they help to make available iron in the soil. Exudation of phytosidrophores, which are released from the plant roots, and then they bind with the iron, and then it is taken up by the plants. Exudation of hydrolytic enzymes, then rhizosheath formation. These are kind of a rhizosheath mean the layer which is developed in the near the rhizosphere and enhance the availability of nutrients. Then we can also increase genetically the uptake or availability by enhancing the root shoot biomass, because if you have more roots, it means the roots will cover more soil to take up the nutrients. Then we can increase the specific root length, greater root branching that can be increased, root hairs can be increased, root turnover can be reduced, improved soil penetration. Uh, if the roots are strong enough to enter into the various or the larger part or the deeper part of the soil, or its movement to the horizontal side, root proliferation in nutrient rich patches, especially the top soil. अगर हमारे पास कुछ स्पीशी ऐसी हैं कि वो डीप उनकी रूट की ग्रोथ हो रही है, तो ज़्यादा डेप्थ में जा रही हैं, बट तो डेप्थ में तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होते, तो इसलिए वी कैन स्प्रेड देम genetically, we can modify them and to spread the roots in the upper surface. So in agronomic biofortification, to enhance the phytoavailability, of course, we can add the fertilizers, and we can add the organic matters in the soil to enhance the soil conditions, and the enhance the, of course, uh, organic matter has also many nutrients, so we can do it by agronomically. We can add iodine fertilizer. So there are very good examples of this, but it's got little attention due to successful for food fortification programs, especially the salt fortification with iodine. But that can happen with agronomic biofortification as well. Addition of iodine in irrigation water in China has successfully increased the level of iodine in rice. And successful biofortification of mustard species has been reported recently. However, cooking of vegetable may affect the bioavailability of iodine. Recent examples में जो स्पीशी है, मस्टर्ड स्पीशीज हैं, उसमें आयोडीन की इनहेंसमेंट और एनरिचमेंट हुई है, लेकिन जब उसको कुक करते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, तो दैट इज इशू स्टिल टू बी एड्रेस्ड. Then iron fertilization, of course. Iron has low mobility in the soil. Conversion of so iron की जो agronomic biofortification है, वो एक तो हम ऐड कर सकते हैं fertilizer, but on the other hand we have to take care of the soil characteristics.
which affect the iron uptake. For example, is low mobility in the soil. Uh, so that is a reason in many cases that soil has iron, but that is not in the approach of plants. So sometimes we have Fe3 in the soil because in mostly the soil, the Fe2 is converted to Fe3, and the Fe2 is basically that can be easily taken up by the plants. So we can produce or develop such conditions which can reduce the uh, reduction of this iron. Then NPK fertilizer can promote the iron uptake, and alkaline conditions reduce the iron and zinc uptake. If you have a high soil pH, NPK fertilizer, of course, when there will be more growth and balanced fertilization, so then that will promote the growth. Sorry, that will promote the uptake from the soil. There will be enough root exudation to make it available. In alkaline soil, again, we have iron and zinc uptake reduction, and if we improve the soil pH, mean by addition of some organic uh, amendments, we can have some effect on that. Foliar spray can be used in the form of FeSO4 or iron chelates, which can also be absorbed by the plant leaves and can be taken up by the plants. Zinc fertilizer. Zinc is very mobile in the soil, easily absorbed, especially under slightly acidic conditions. So it means the soil application of zinc is very effective, and it has been proved in many areas. Zinc fertilizers such as zinc sulfate can increase the yield of cereals and legumes in zinc deficient soils, also increase zinc levels in the grains dependent on the genotypes. So here these 2 points, as I mentioned earlier, that the agronomic biofortification is more effective if your soils are deficient. And deficient in two ways. The one is deficient कि वो crop के लिए उसमें जो already हमारी required amount है वो अगर available भी है, लेकिन उसमें फिर भी अगर आपकी crop के अंदर potential है कि वो आप फर्दर फर्टिलाइजर डालेंगे उसमें तो वो यील्ड के ऊपर तो शायद उसका इफेक्ट ना हो, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन ग्रेन में बढ़ सकती है। यानी आप एक्स्ट्रा अगर फर्ज किया कि आप 10 केजी डाल रहे हैं 1 एकड़ में, तो आप एक्स्ट्रा 15 केजी यानी 5 केजी एक्स्ट्रा डाल दें तो वो उसकी यील्ड को तो ना इंक्रीज करे, लेकिन ग्रेन की कंसंट्रेशन जो है ग्रेन जिंक कंसंट्रेशन उसको एनहेंस कर दे। तो ये चांसेस हैं अगर उसकी जीनोटाइप में पोटेंशियल है। जैसे ये लोअर पॉइंट है कि ये जीनोटाइप्स के ऊपर डिपेंडेंट, सम जीनोटाइप्स हैज पोटेंशियल that if you apply zinc to the soil that will enhance zinc in the grain, but there are genotypes कि अगर आप उसमें जितनी मर्जी फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो वो enhance नहीं होगा, तो we have to check for that. So these are examples here जहाँ पे जिंक की डेफिशिएंसी थी, वहां पे जब जिंक को ऐड किया तो वो जो क्रॉप ग्रोथ है वो ज्यादा होगी। तो ये टर्की की एग्जांपल है जहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेफिशिएंसी है ग्रेन जिंक 12 ppm है, 12 ppm, इसकी ग्रोथ यील्ड भी कम है। अगर जब आपने जिंक अप्लाई किया तो उसकी ग्रोथ भी बेटर हुई और उसके ग्रेन के अंदर 35 मिलीग्राम पर केजी जो है वो जिंक ऐड हो गया। तो इट मीन्स के जहाँ पे डेफिशिएंट हैं साइज वहां पे ये वेरी इफेक्टिव है कि ये नॉट ओनली कि वो उसकी यील्ड को इम्प्रूव करता है बट आल्सो उस ग्रेन जिंक कंसंट्रेशन। तो ये वो उन लोगों के लिए कि जो समझते हैं कि एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन जो है पॉसिबल नहीं है, तो जिंक डेफिशिएंट साइल में ये बहुत इफेक्टिवली पॉसिबल है। एंड वी हैव a huge area of zinc deficient soils worldwide.
तो इसलिए एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन की जो सिग्निफिकेंस है वो यू कैन नॉट डिनाई दैट। हाउएवर अगर आप जिंक अप्लाई भी करते हैं सॉइल के अंदर, तो अगर सॉइल में की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, so which can not let it be taken up by the plants. For example, if your soil has high calcium carbonate, high pH, clay soils, low organic matter, low soil moisture, high iron and aluminum oxide, तो ये आयरन और कैल्शियम जो है ये इनको प्रिसिपिटेट करते हैं, तो इसकी वजह से इसकी अपटेक जो है वो कम होती है। और इसकी जो अपटेक कम क्यों होती है कि इसकी डिसऑर्प्शन नहीं होती, ये प्रेसिपिटेटेड होते हैं साल के, अगर क्ले बहुत ज्यादा है तो क्ले के साथ ऑफ कोर्स ये अटैच होंगे, तो इनकी डिसऑर्प्शन जब तक नहीं होगी साल पार्टिकल से उस वक्त तक इसकी अपटेक नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपकी साइल्स में ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो देन इफ यू अप्लाई जिंक इन दीज कंडीशंस यू हैव टू मैनेज सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स एज वेल। तो लेकिन ये डजंट, इसका मतलब ये नहीं कि इफ यू ऐड फर्टिलाइजर इन सच कंडीशन देयर विल बी नो अपटेक, देयर विल बी अपटेक बट देयर विल बी लेस अपटेक, so that must be taken care of while applying fertilizers. सेलेनियम फर्टिलाइजर जो है इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है कि इट इज नॉट essential nutrient or essential element for plant growth, but plants has ability to take up those elements which are not required for their growth, but they are taking up those elements for animal and human needs, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो उन प्लांट बेस्ड फूड है और वो सारी की सारी उन्होंने साइल से ही लेनी है। अगर साइल में से सिर्फ प्लांट वही एलिमेंट लें जो उनके लिए रिक्वायर्ड हैं, तो बहुत सारी जो न्यूट्रिशन है विच वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट वो हमें आर्टिफिशियली लेनी पड़ेगी। तो इट इज ब्लेसिंग कि प्लांट्स दे कैन टेक अप सेलेनियम, it is highly mobile in many soil types, it is absorbed easily by plants, इससे दूसरी ये है कि प्लांट्स की एबिलिटी है, एंड इन द केस ऑफ सीरियल्स accumulates in the grains, और तीसरी ये कि ये ग्रेन में accumulate होता है, तो क्योंकि हमने ग्रेन खाना है, अगर ग्रेन में ना हो तो ये पत्तू में तो वो जानवरों के लिए तो सही है तो वो भूसे में आ जाएगा, लेकिन जब तक ग्रेन में नहीं आएगा हम नहीं उसको यूज कर सकते। तो दिस इज गुड कि ये ग्रेन में भी आता है। It accumulates in a readily bioavailable for selenium-methionine, और ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो है स्टमक के अंदर, ये बायोअवेलेबिलिटी का ऊपर पूरा लेक्चर है, हम इसको पढ़ेंगे कि ये इस फार्म में होता है कि ये बॉडी जो है इसको अब्जॉर्ब कर सकती है। अगर ये बॉडी के अंदर इस फार्म में चला जाए कि इसको अब्जॉर्ब भी ना कर सके, तो देन इट इज अगेन इशू टू बी सॉल्व। तो लेकिन गुड थिंग इज दैट कि ये सारे जो ब्लेसिंग्स हैं ये हैं, और सेलेनियम की फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारे ग्रेन्स को बायोफोर्टिफाई करती है। सेलेनियम की डेफिशिएंसी इन सॉइल जो है वो मेजर रीजन है इसकी, हमारी जो न्यूट्रिशन है उसमें कमी। अगर आप देखें तो अफ्रीका की सॉइल्स हैं, ये सॉइल्स जो यूरोप वगैरह की ये देख लें, ये कुछ ये चाइना का एरिया आता है, ये साउथ अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पे सेलेनियम जो है वो डेफिशिएंट है। तो इन इस तरह की सॉइल्स में इफ वी अप्लाई सेलेनियम, सो यू कैन गेट रिस्पांस इन द ग्रेन्स। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको क्लियरली जब आप सेलेनियम अप्लाई कर रहे हैं, आपको क्लियरली ग्रेन में इसकी कंसंट्रेशन इनहेंस हो रही है। तो इसमें आप ये लिक्विड ड्रेंच है सोडियम सेलेनेट, ये कैन के साथ ग्रेनुलर फॉर्म में सेलेनियम डालेगी या एनपी के साथ डालेगी, तो सब में आप देखेंगे यू कैन ऑब्जर्व दैट इफ वी enhance the application rate, so there is increase in grain selenium content, so this is great success.
So then we have increased mineral uptake. तो ये पहला तो था कि phyto availability है कि हम phyto availability हाँ वो genetics way से increase करें या हम agronomic way से करें. तो ये हमारी first approach है which we have already discussed. Now we have two other approaches. Increase mineral uptake capacity of plants and then enhance mineral accumulation in edible parts. तो ये दोनों जो हैं, so that these cannot be possible through agronomic way. So we have to uh, uh, opt the genetic uh, biofortification. So we will discuss both together. वही जो हमने पहले डिस्कस किया है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग है, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग टू डेवलप बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स. ये अगर आप देखें तो ये यानी उसमें हम दूसरे करेक्टरिस्टिक्स भी ऑफ कोर्स हम उसके साथ जो है उसके लिए उनको ब्रीड कर सकते हैं कि ड्राउट टॉलरेंट भी हो. अगर यहाँ पे देखें ये ड्राउट टॉलरेंट है, ये हाई आयरन बीन्स हैं, दो हैं. सो वी नीड कि हमारे पास पानी की कमी भी है, वी नीड कि ड्राउट टॉलरेंट भी हो और उसमें हाई आयरन भी हो. तो अगर आप उनका क्रॉस करें यू कैन गेट सम हाई आयरन ड्राउट टॉलरेंट भी. लेकिन ये ऑफ कोर्स ये नहीं कि आप एक ही दफा में आप 50 से 100 ppm पे चले जाएं, बट यू हैव टू वेट कि आप एक दफा उसकी ब्रीडिंग करवा के आप उसकी 10 ppm इनहेंस कर ले, फिर नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ ब्रीड करके फिर 10 ppm. तो इस तरह दिस इज स्टेप वाइज and but and of course slow way. You may need many years for that, but you have option and you can go for that. जो ट्रांसजेनिक अप्रोच है मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एफिशिएंट है. ये हम रूट्स से जो है इसकी अपटेक को इनहेंस करते हैं. जो रूट्स के अंदर जो डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं वो उनको हम यूटिलाइज करते हैं. मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा. आई एम आल्सो नॉट वेरी मच एक्सपर्ट ऑन दैट, बट so there are transporters here in the roots which can be genetically modified. You can transform from one crop species to other species. And then here the accumulation in the grains, you can go for that कि जो ग्रेन के अंदर एक्यूमुलेशन है उसके लिए भी हमारे पास ट्रांसपोर्टर है, वी कैन गो फॉर दैट. पॉसिबल बायोफोर्टिफिकेशन अगर हम उसको ब्रीफ करूं तो अपटेक है जो स्पेशली जो इस हवाले से है, जो इसकी अपटेक के हवाले से है, या अपटेक एंड एक्यूमुलेशन द ग्रेन. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि उसकी अपटेक इंक्रीज कर सके. सो ऑफ कोर्स देयर आर ट्रांसपोर्टर फॉर दैट. वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट ईच nutrient has its own transporters. We can enhance the concentration or activity of those transporters. Then to take up, then of course we need, as in the grain there is a step xylem loading, so there are transporter which can be modified. Then we have phloem transport from the leaves कि जब लीफ में accumulate हुआ वो utilize हुआ, then that must go into the phloem. And then of course unloading for grain filling कि ग्रेन के अंदर जब पहुंच के वहां पे उसकी जो अनलोडिंग है वहां पे भी ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड देन जो स्किन के अंदर नहीं कि उसकी स्किन के अंदर ही वो एक्यूमुलेट हो जाए, हमें उसके एंडोस्पर्म में भी चाहिए. So all these steps can be managed through genetic and through genetic biofortification, starting from uptake to accumulation into the grain. So we have technology. We can use that to check that where is more accumulation. For example, you can observe here, this is a zinc concentration. एंडोस्पर्म में इसकी जो कलर की इंटेंसिटी है दैट टेल्स अस अबाउट द कंसंट्रेशन. एंडोस्पर्म में उसकी कंसंट्रेशन, एम्ब्रियो में, एल्यूरान में, तो एम्ब्रियो में की साइड पे जो है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है. सो दैट्स अगर आप फाइन आटा खाएंगे ऊपर से ब्रेन उसका उतार के फेंकेंगे तो ये उसमें वेस्ट हो जाएगा. So there is technology, we can stain the grain
and we can localize. Here we can also do it at UF. So that was all about today's lecture. The next is about improving bioavailability of minerals for humans. So this is also very important कि अगर आपने सारा कुछ कर लिया है, आपने enhance कर लिया, आपने grain में उसकी concentration बढ़ा ली है, लेकिन वो आपकी body उसको absorb भी नहीं कर रही, तो then there is no use of all these activities. So this is also a very important part of biofortification that will be discussed later on. So thank you very much.